सो हम जो है श्री शिवराम स्वामी महाराज का किताब है शिक्षा गुरु, उसके विषय में हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट वीक। तो और वो डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ, तो भक्ति के जो 64 अंग है उन अंगों के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। एंड देन द फर्स्ट अंग ऑफ भक्ति अमंग ऑल द 64 लिम्स, 64 अंग है, सबसे पहला अंग क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय, कि आध्यात्मिक गुरु के चरणों का आश्रय लेना और उनसे दीक्षा ग्रहण करना। तो इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु तत्व क्या है जानना। क्या देखा था, क्या देखा था? कीजिए कृपया। हमने देखा था कि श्री कृष्ण आदि गुरु है, इज ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, एंड कृष्ण comes in this world again to give this knowledge. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि सकालिने माता योगो नष्ट परंतपा. Krishna says in Bhagavad Gita that this is the knowledge, initially I gave this knowledge in parampara, this is passed down, this is royal knowledge, it's passed down in parampara, and when the parampara got broken, again Krishna appears to establish that parampara. तो कृष्ण संप्रदाय आचार्य, आदि गुरु भी कहते हैं, संप्रदाय आचार्य भी कहते हैं, उनको एक ज्ञान देते हैं और उन आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान हम तक पहुंचता है। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक of course there are multiple kind of guru we discuss prominently, but we were discussing about शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा प्रदान करते हो, दीक्षा गुरु जो हमें दीक्षा देते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको कैसे अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट दे। सकले सम्मान कोरिते शकोति देहोनाथ जथाजुत। Oh Gurudev, give me power to respect each Vaishnava according to their varying strength. So we have to understand how to recognize a Vaishnava. We have to learn a proper etiquette of worship. It is mentioned in scripture, if you don't follow proper etiquette, specifically for devotees, जो भक्त है, उनको पता ही नहीं है कैसे उसको कैसे रिस्पेक्ट करना है. So there is no fault on their part. और जो भक्त है, it is expected, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जाने किसको कैसा उनके अलग अलग आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार उनको आदर प्रदान करना है और कैसे मर्यादा अतिक्रम नहीं करना है। ये बहुत सारे एटिकेट्स हैं, तो हम कुछ कुछ पढ़ेंगे आज उस किताब से, शिक्षा गुरु इस किताब से। तो आपको मैंने वैसे तो पीडीएफ शेयर किया है ग्रुप में। तो स्पेसिफिकली सवाल आता है कि गुरु और शिक्षा गुरु, ISKCON में ऐसा होता है कि गुरु से हम दीक्षा लेते हैं, परंतु कभी कभी over the period of time actually our focus may change and we may get inspired by different devotees, right? So there are two parts to commitment to a spiritual master, or two parts to consider in relation to spiritual master. Shivaram Maharaj mentions here दो उसके पार्ट है। एक है कि जो एटिकेट, ट्रेडिशनल एटिकेट, और दूसरा है अट्रैक्शन to teachings or to the personality, right? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि okay, we are traditionally initiated by particular devotee, but we are attracted by certain other devotees. उनसे हमें और अच्छा लगता है उनका टीचिंग सुनना, उनके क्लासेस सुनना और उनसे शिक्षा लेना। तो फिर हम किसको आदर प्रदान करें? जिनसे हमने दीक्षा लिया उनको आदर प्रदान करें, या जिनको हमें अट्रैक्शन है जिनकी क्लासेस सुनने में और जिनकी शिक्षा ग्रहण करने में। तो शिवराम महाराज यहाँ पे उसको let me go exactly to that so that I can read out something. Okay, तो स्वरूप लक्षणार तटस्थ लक्षण एक दुई लक्षण वस्तु जाने मुनिगण। कोई भी वस्तु समझना है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, तो दो प्रकार से वस्तु समझ सकते हैं। By two symptoms, personal characteristics and marginal characteristics, the great sages can understand an object. मान संत होते हैं या जो ग्रेट sages मुनि होते हैं, वो दो प्रकार से कोई भी वस्तु को जानते हैं। एक है मुख्य लक्षण या स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो इसी प्रकार से क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो ये हम स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से सीखने का प्रयास करेंगे। सो इन रिलेशन टू वन स्पिरिचुअल मास्टर, both what is a consideration of what is Svarupa lakshan, what is tatastha lakshan, we'll try to understand in relation to spiritual master. So Srila Prabhupada writes in one of the purports, right? Is it purport? Yes, Madhya Lila purport.
An advanced devotee is attracted by service rendered by eternal servitor of the Lord. This attraction is called spontaneous attraction. तो भगवान के जो महान भक्त है उनके तरफ उनका सेवा देख के हम आकर्षित से स्वरूप उपलब्धि भी कहा जाता है. Technically it is called as स्वरूप उपलब्धि. This stage is not achieved in the beginning. In the beginning, one has to render service strictly according to regulative principles set forth by revealed scriptures and spiritual master. A continuously rendering service through process of Vaidhi Bhakti, one's natural inclination is gradually awakened. That is called spontaneous attraction or Raganuga Bhakti. तो पहले हम साधना भक्ति का अभ्यास करते हैं और साधना भक्ति का अभ्यास करने से हमारे हृदय में राग उत्पन्न होता है, अनुराग. स्पेशल अट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन इज डेवलप्ड ऑन इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. तो स्वरूप लक्षण क्या है? जो सदैव उपस्थित होते हैं. प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते कि what is always present is called as स्वरूप लक्षण, and what is sometime present, sometime not present, it is called as tatastha लक्षण. Prabhupada says this in a lecture dated December 20, 1966. Prabhupada explained symptom are to be analyzed by two divisions. One is always present, called as Svarupa lakshan, tatastha lakshan, symptoms which are sometimes present, sometimes not present. In relation to spiritual master, what is always present is our obedience and commitment to spiritual master need to be always present. कि हमारा जो गुरु के प्रति जो हमारा कर्तव्य है और हमारा जो obedience, हम जो उनको follow करते हैं, what we call obedience, Shastri. How you translate obedience in Hindi? आज्ञाधारकता में कह सकता हूँ, आज्ञाधारकता. तो गुरु के प्रति हमारा आज्ञाधारकता और गुरु के प्रति सम्मान देने का हमारा जो भाव है, that always needs to be there. परंतु गुरु के प्रति attraction sometime it may be there, sometime may not be there. ऐसा नहीं कि मैं attract नहीं हो रहा तो गुरु को follow नहीं करना है. So the Svarupa lakshan is actually our commitment, our obedience to our spiritual master, and that attraction sometime it may be there, sometime it may not be there. Attraction to Guru and following his instruction. Srila Prabhupada explains that pure attachment manifests at later stage of devotion and is not present in the beginning. From this, we may conclude that attachment not always present. It is a marginal characteristic. That is the lakshan. Similarly, because obedience to order of spiritual master is present throughout all stages of relationship, it is personal characteristic or Svarupa lakshan. So, what is the primary characteristic is our obedience, our following the orders of our spiritual master. Even attraction may be there or may not be there. So this will help us to understand the code of conduct for a disciple कि एक शिष्य ने कैसे कार्य करना चाहिए. तो शिष्य का कर्तव्य कि आकर्षण रहे गुरु से ना रहे, परंतु आपने दीक्षा लिया है तो गुरु का आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए ही. There is no doubt about that. Okay, I'll read further a little more. तो आप गुरु का स्वीकार कैसे करते हो? अटैचमेंट इन सिलेक्शन ऑफ गुरु. कि गुरु कई बार भक्तों को प्रश्न रहता है कि गुरु का हम स्वीकार कैसे करें. ISKCON में कितने सारे गुरु हैं, हाउ डू आई चूज गुरु? तो महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं कि दिस वेरी वेरी सीरियस रिलेशनशिप and we being a non-liberated souls have a tendency to commit error. One should carefully select a guru according to the regulations of Shastri. So conditioned living entity may commit a lot of errors. A preliminary attachment may be contaminated with many mundane consideration and cannot be sole foundation for such conclusive action. So शुरुआत में ही हम जब गुरु के संपर्क में आते हैं या अलग-अलग भक्तों के संपर्क में आते हैं, so initially our attachment to that personality may be contaminated with many mundane consideration. कि भौतिकवादी विचारों से हम उनके प्रति आकर्षित हो सकते हैं. Example of such immaterial factors which falsify relationships are attachment to amiable personal habits, charm or charisma, expertise in devotional arts, or humorous delivery of a class. कि कोई class बहुत विनोद, if somebody is cracking a lot of jokes, you get attracted. बहुत attractive presentation है, philosophy का, या बहुत expert है कोई singing में, या कोई बहुत एकदम दिखने के लिए एकदम charismatic है, so initially we may get attracted by such external factors. परंतु महाराज कह रहे हैं कि हमें कैसे गुरु का स्वीकार करना चाहिए. In the matter of selecting guru, the dominant attraction should be how well the spiritual master follows his gurus and the founder acharya. कि
फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी का पालन कितने निर्धार से मेरे गुरु या होने वाले गुरु, मैं जिनको चाहता हूँ मेरे गुरु बने, वो कर रहे हैं। ये सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए गुरु का। अटैचमेंट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मेक्स फॉर वीक स्पिरिचुअल फाउंडेशन एंड विल लीड टू डिफिकल्टी फॉर डिसाइपल इन लॉन्ग टर्म। हम सिर्फ सुपरफिशियली गुरु को अट्रैक्टेड है, based upon the presentation or based upon certain expertises, that is not a very strong foundation. We should see what is service of my spiritual master to his spiritual master or to a founder acharya of ISKCON, Srila Prabhupada. Okay, so we'll read a little further. नहीं हो रहा ना फिर मुझे। एक बार शेयर करते हैं। Should I highlight it? दिख रहा है क्या आपको? Are you able to see? Yes, Guru. Yes. Good. PDF दिख रहा है आपको, very nice. PDF नहीं दिख रहा मुझे। PDF नहीं। होम स्क्रीन दिख रही प्रभु। ये पता नहीं ऐसे क्यों है, PDF शेयर करता हूँ होता नहीं है। पेज नंबर प्रभु जी बताएंगे, मैं शेयर। But I am changing actually always. Okay, I'll still tell page number. Okay, माता जी को मैं एक्सेस देता हूँ, मैं पेज नंबर बताता हूँ. Okay, this part 2. Okay, this part 2. This is not part 1. Part 2. We are on page number 88. So attachment to Guru is a marginal characteristic, but the primary characteristic in relation to one's Guru is one's following one's order of Guru. That is a traditional protocol. The traditional protocol directs preliminary primary attachment. We are reading on 87 actually. 87 पे पढ़ रहे हैं। दिख रहा है आपको? उसके पहले ऊपर 87 थोड़ा ऊपर। यस, ओके, थोड़ा एक्चुअली मतलब और थोड़ा नीचे लीजिए, ठीक है, नीचे नीचे, सॉरी ऊपर लीजिए, या the attachment to Vaishnava is the attachment of Vaishnava is to the injection of Shastri, order of spiritual master, not apparent personal characteristics. Such determination will give spiritual strength to withstand the tribulation which arise in the practice of sadhana bhakti. Following the order of bona fide spiritual master is only duty of the disciple, and this completely faithful execution of the order of bona fide spiritual master is the secret of success. So that is only consideration, not how much I am attached or not attached to my Guru. But our consideration should be, even I am not attached, but I should follow the order of my spiritual master. So we'll read further. So initially we may not have attachment. Traditional protocol directs the primary attachment of the sadhaka toward Diksha Guru. In the mature stage of devotion, this attitude may change as a consequence of great inspiration and intimate association with the instructor. So initially we may not be that attached, but gradually by regularly hearing association, by hearing from spiritual master and by serving उनका गुरु का पालन करके, उनका सेवा करके, we may develop an attachment. Why initially attachment may be there, may not be there. So, however, even in the preliminary stage of devotion, when the disciple is distant from liberated stage, there are a variety of reasons for marginal aspect to be directed towards Shiksha Guru. Among many such reasons, क्यों हम शिक्षा गुरु की तरफ आकर्षित होते हैं? Initially, right? There are some reasons that marginal
दो हमने देखे, एक स्वरूप लक्षण, एक मार्जिन तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण देखा कि गुरु के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, जो गुरु के प्रति जो ओबीडियंस है, आज्ञा धारक है, होना चाहिए। और तटस्थ लक्षण देखा कि अटैचमेंट होना चाहिए। Sometimes that attachment is directed more toward Shiksha Guru. Amongst its many reasons, the followings are included. क्योंकि हमें एटिकेट को फॉलो करना है, तो इसीलिए हम कैसे वो एटिकेट फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे इसीलिए दिया है कि the Diksha Guru has been accepted out of formality, कि हमने दूसरों का देख के दीक्षा गुरु स्वीकार किया है, हमने इतना सोचा नहीं था, right? In a peer pressure, if we accepted out of formality, without having sufficient introduction with that or sufficient attachment to that personality, so we follow. Gradually we hear from that devotee, and then in this way we develop attachment to that devotee. As long as that I'll read, okay, no, you're not able to share everything, Mataji, because you to बहुत time लगेगा. जब तक गुरु हमारा अटैचमेंट भी नहीं है, जब तक गुरु अच्छे से सेवा नो लाइक वो प्रभुपाद से जुड़े हैं और भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, is in good standing, is following spiritual life, we should accept that spiritual master and we should follow his orders. तो दूसरा है कि due to points of etiquette, कभी कभी शिक्षा गुरु को अटैचमेंट ज्यादा दिखाएगा डिसाइपल than दीक्षा गुरु out of points of etiquette, right? So जैसे किसी के दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जो है वो दीक्षा गुरु के भी शिक्षा गुरु है, समझो. Like I give an example of, let's say Kadam Karan Maharaj is a disciple of Jayadvat Swami Maharaj. As somebody has Jayadvat Swami Maharaj as Shiksha Guru and Kadam Karan Maharaj is the Diksha Guru. So in this case, because Shiksha Guru is also Diksha Guru of our Diksha Guru, that's why actually we show more respect to Shiksha Guru than Diksha Guru. So out of etiquette, in this case, we offer more respect to our Shiksha Guru. तीसरा पॉइंट लिखा, if the Diksha Guru cannot give guidance to a disciple, say a disciple was properly initiated by Vaishnava, but because of certain situation, because Diksha Guru is very far, बहुत distance है और बहुत दूर है, उनसे कनेक्ट पाना मुश्किल है, उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, इसके कारण आपको sufficient time नहीं दे पा रहे. At that time, the disciple lacks the security and shelter of being guided back to Godhead, and he may seek permission from his Guru to find shelter in Shiksha Guru to protect him from material energy. As a natural development, the Shiksha Guru may become the focus of greater attachment than a rarely seen Diksha Guru. This will be exception to the direction of the marginal characteristic. But the disciple seeing the Diksha Guru as an arrangement of his initiator will adhere to traditional protocol and show him preferential worship. So क्योंकि दीक्षा गुरु समझो दूर है, उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, because so many followers are there, it is difficult to get his time. So in this all case, under the guidance of Diksha Guru, one may accept a Shiksha Guru, and in that case, that attachment may be more to a Shiksha Guru than a Diksha Guru. But as a traditional protocol, whenever there is a question of offering respect, one should always offer proper respect to one's own spiritual master. But the disciple seeing his Shiksha Guru as an arrangement of his initiator will adhere to traditional protocol and show him preferential worship. So sometime you may show preferential worship to your Shiksha Guru because that's the only connection you have got. Maharaj is written here. So these are the cases where how we should observe etiquette is mentioned here. किसी को कोई प्रश्न है? Actually, I was read this and I'm just trying to present what is Maharaj written. Any question anybody has till now? अच्छा, माता जी बोल रहे कि ग्रुप पे पीडीएफ शेयर करो. माता जी आप डाल दीजिए भक्ति शास्त्री ग्रुप में, श्लोका रिसाइटेशन ग्रुप में पीडीएफ डाल दीजिए. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Prabhuji, it's the Shiksha Guru who takes us to the Diksha Guru, right? By giving us all the teachings and for like we don't know the mood of our Diksha Guru. So it is the Shiksha Guru who teaches us the mood and the qualities, and so that we get a little educated in terms of like when you know something you want to know, so someone you want to make him as your Diksha Guru, आपको उनके बारे में जानना चाहिए, तब आपको पता चलेगा. So Prabhuji, in that case, Diksha Guru, I just want to understand,
शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में we as a साधका whatever they may be, हम एज अ साधका हमारा क्या उनको मतलब रिस्पेक्ट रहते हैं इक्वल या दीक्षा गुरु शुड हैव अ हायर प्रेसिडेंस? So Diksha Guru as a etiquette will always carry higher precedence and we offer higher respect to a Diksha Guru. And हाँ. in a traditional role, Shiksha Guru always acts like an assistant to Diksha Guru. It's an etiquette, Srila Prabhupada says, as long as the Diksha Guru is present, Shiksha Guru doesn't initiate a devotee. ये etiquette है कि Diksha Guru होते जब तक है तब तक Shiksha Guru आपको दीक्षा नहीं देते, नहीं carries disciple to a spiritual master. Yes. And Yes. He also follows the same mood as spiritual master, his spiritual master and founder acharya. Yes. या कभी कभी जैसे he not only his spiritual master, any spiritual master. Let's say somebody is acting like Shiksha Guru and one may take one's Shiksha disciples to a spiritual master who is not one's own spiritual master, right? Then one should, that Shiksha Guru take care. सुन रहे हैं ना? So that Shiksha Guru ने क्या करना चाहिए कि जो उनके दीक्षा गुरु है, हालांकि वो उनके दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु के दीक्षा गुरु नहीं है, वो शिक्षा गुरु के जो डिसाइपल है उनके दीक्षा गुरु है, he should try to instruct that disciple in a mood of his own, yeah, that devotee शिक्षा दीक्षा गुरु. समझ में आ रहा है आपको? Yes, yes. So in case of like disciples of Bhakti Charu Maharaj, right? So let's say if I am guiding somebody who is a disciple of Bhakti Charu Swami Maharaj, then I should be actually trying to understand what is the mood of Bhakti Charu Maharaj, and try to direct his disciple as per the mood of Bhakti Charu Swami Maharaj. Yes, yes. Okay, Prabhuji, got it. Initiating a spiritual master because he's taking a, now it depends upon responsibilities taken. एक मिनट थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, मैं बहुत सारी चीजें मैं पढ़ने की जगह पे भी जो समझ में उतना बता दूं तो ज्यादा इजी रहेगा आपको एक्चुअली. तो अलग अलग लेवल पे कमिटमेंट अलग अलग गुरु दिखाते हैं. Sometime a particular guru takes a lot of responsibility for a disciple. Among Shiksha Gurus also we offer varying respect. So and Diksha Guru takes the highest responsibility of delivering a disciple from this world to spiritual world. Okay, क्योंकि वो commitment लेते हैं, इसलिए they deserve the highest respect. You're getting this point? Because they take responsibility. Okay. Now second is a commitment at the level of Shiksha. That some gurus may give just Bhagavatam class. Okay, they may give some classes and they'll go away. You know, there is no direct involvement in life of a devotee. But some devotees, right from beginning, they will make sure that this devotee is guided up to the point of love of God. Gradually, the tender creeper of devotion grows and becomes the love of God. So they're taking a greater responsibility. So they also deserve a lot of respect. Among various Shiksha Gurus, those who take a personal commitment for their disciples, right? They deserve a lot of respect. More respect. Second is one has taken a greater risk. Sometimes a devotee may travel to a distant place and just for sake of those devotees there present, there are people there. This is Srila Prabhupada ji inta sa risk. There are so many disciples of Bhakti Siddhanta Thakur. Srila Prabhupada personally traveled, taking all the risk at an advanced age. 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहां पे उन्हें प्रचार किया. So among all the God brothers, Srila Prabhupada deserves respect, more respect, or there might be more Shiksha Gurus, but Srila Prabhupada deserves more respect because actually Srila Prabhupada is founder acharya also, so he deserves the highest respect. But we are talking in terms of more risk because he took risk, or anybody who takes a risk actually deserves high respect. Third is facility. कि अभी कलयुग में just आपको instruction दे के नहीं, you have to also create temples, monasteries, ashrams. You know, we have to create facility for a devotee to practice devotional service. So the devotee who takes responsibility for raising, like आजकल facility बनाना means one has to responsible raising funds, maintenance, and so many other headaches come along with that. So a person who takes such a responsibility for facilitating a devotee's spiritual life, actually he also deserves more respect. So facility, risk, and responsibility. These are the three considerations, right? And in a Bhajananandi and Goshtanandi, it is written that Bhajananandi may be perfected person, but Goshtanandi, he may be practitioner, and Bhajananandi may be perfected person. But still, Goshtanandi is considered more respectful, or is respect worthy, because he's taking the responsibility. Or what is Bhajananandi? He's interested in his own welfare. So he'll not go out, and he may preach, but whom he'll preach?
कि वो उनके मस्ट में जो आते हैं वहां पे बैठे हुए जो आते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रीचिंग करेंगे, बट दैट्स नॉट दैट इज गोइंग आउट ऑफ द वे एंड ट्राइंग टू गिव शेल्टर एंड क्रिएट फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल लाइफ. ही इज मोर लिस्टली कंसर्न हिज ओन डिवोशनल सर्विस, खुद के भक्ति के बारे में ज्यादा कंसर्न. सो ही मे बी परफेक्टेड, बट Goshanand is written here. I'll just read as it is, few lines. The Goshanand is principally concerned for the welfare of others. From the perspective of preaching, the Goshanand is considered the better of the two, even if the Bhajanand is perfect and the preacher is a practitioner. Because of the latter's selfless attitude, he is considered more completely situated. So he is more completely situated. So he deserves more respect. Okay. So there are few more things I want to add. Thoda question baad mein करते हैं. So the wife. Thank you, Prabhu. Mute कीजिए please. ओके, और थोड़ा पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है. अभी बाकी सारे वैष्णव में समझो गुरु जो है, गुरु इज जूनियर एंड दे आर सीनियर स्पिरिचुअल डिसाइपल्स. Srila Prabhupada, our spiritual master may be junior, and there might be other spiritual masters who are more senior and more senior disciples of Srila Prabhupada. So while offering respect, we'll offer more respect. Externally, we'll offer more respect to the senior disciples of our spiritual master, like senior God brothers, our spiritual master. But internally in the heart, actually, a guru is always special. It's like a father and son. So among so many people, even guru may be of a lesser, we understand our guru is of a lesser spiritual caliber than other personality. कभी कभी हमें पता लगेगा कि हमारे गुरु प्रॉब्ली आध्यात्मिक प्रगति में दूसरे के गुरु से कम है थोड़े से, तो भी, और externally we may show high respect to person who is very highly spiritually advanced, and those who are senior basically. But in a heart, for a devotee, the guru is always has highest respect. उदाहरण दिया जाता है इस पे, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक पिता और पुत्र का. अब एक पुत्र होता है, अभी समाज में तो बहुत सारे पुरुष हैं और उनमें बहुत सारा शक्ति रह सकता है. They may be very much more powerful and they may be much more successful than one's own father. But one's father deserves more respect compared to all other people. Similarly, our own spiritual master in our heart, actually we carry out his own instruction. We don't go by कि मेरे गुरु इतने पावरफुल नहीं तो चलो दूसरे को हम फॉलो करेंगे, दूसरे गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं. मेरे गुरु है, उन्होंने मेरा जिम्मेदारी लिया है. So I'll follow orders of my own spiritual master. So that is also there. Now, thing is, sometime guru might appear like acting like an ordinary person. So how to do that? How to see that? That is also answered here. So Srila Prabhupada says, even sometimes the guru may be seen an ordinary person, he should be respected as good as God. So Srila Prabhupada in Honolulu, Srila Prabhupada says, अच्छा ये खोल सकते हैं 122 पेज 122 123 पढ़ेंगे. Okay, I'll read till that time. Srila Prabhupada said, and Guru, the spiritual master, he is an ordinary man. These are forbidden. So why Guru is to be considered Sakshat Haritvena Samasta Shastra? Exactly like Supreme Personality of Godhead. क्यों गुरु को भगवान की तरह समझना चाहिए? That reason is given there. That reason is that he is giving the Krishna knowledge, and therefore he is as good as Krishna. Even though his family members or his friends are thinking, oh, he has now become a guru, still he should be considered the Supreme Personality of Godhead. That is the reason also given there. That even Krishna was taken an ordinary man, but does it mean that he becomes an ordinary person? No. Similarly, our movement, it may appear that just like any other movement, but because the movement is giving Krishna, that means it is as good as Krishna. So because Guru gives spiritual knowledge, and the spiritual knowledge is not different from Krishna, so Guru also, who is a transmitter of spiritual master, spiritual knowledge becomes as respect worthy as Krishna. जितना हम कृष्ण को आदर देते हैं, जैसे कृष्ण को भगवान मानते हैं, जो गुरु वो संदेश देते हैं, sometimes it may appear is committing ordinary activities. Still, we don't look at those ordinary activities.
आगे भी पढ़ेंगे। तो कभी कभी उसके बाकी गुरु भाई है या बाकी उसके परिवारवासी वो देखेंगे यार ये तो ऑर्डिनरी है, परंतु डिसाइपल के लिए वो ऑर्डिनरी नहीं है, जो क्योंकि भगवान का ज्ञान मिला हमें उस गुरु के द्वारा, इसलिए वो भगवान के समान है। यहाँ पे कहा गया है। आगे भी 123 पेज पे पढ़ेंगे। 123। Okay. In studying Srila Prabhupada's innumerable instructions on the position of spiritual master, it is found that his teachings remain consistently this: the Guru is meant to be worshipped as good as God. It does not indicate that some other form of regard should be adopted, even if Guru is less than Uttamadhikari. Guru Uttamadhikari में नहीं है, मध्यमाधिकारी जो भी है, परंतु क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें दिए है, इसलिए गुरु का हम भगवान की तरह ही आदर करते हैं। He does not indicate that some other form of regard should be adopted, even if Guru is less than Uttamadhikari. One who eradicates ajnana, andhikar, darkness. In the darkness, if somebody brings lamp, ajnanati brandasya, jnananjana shalakaya, ज्ञानदीप, torchlight, he is a guru. तो हम जो अंधकार में फंसे हुए थे, हमें किसी ने ज्ञान दिया है, तो हमारे गुरु है. So maybe different degrees, but anyone who opens the spiritual eyes, he is a guru. But it doesn't matter that degree. Actually, if the guru teaches Krishna consciousness, then he may be lesser degree, but he is accepted as guru. तो जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते हैं, हालांकि वो इतने प्रगत ना रहे, परंतु क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, तो उनको हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं. There is no question of rejection because Krishna is actually Jnana. One who teaches Krishna as the supreme personality of Godhead, one has to know Krishna, one has to surrender to Krishna. This kind of teaching is required. Okay, because one who is giving Krishna, so one who gives Krishna is also considered as good as Krishna. So spiritual master will be always worshipped as good as God, but the degree of worship may vary related to the strength of a devotee. Okay, you may close this, Mataji. तो जो आध्यात्मिक गुरु है, स्पेसिफिकली शिक्षा गुरु, उनका हम सदैव आदर करेंगे, परंतु किसका कितना आदर करते हैं दैट में डिफर. अभी आदर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप आरती का सबसे पहले आरती का किसको लैम्प देते हो, या किसको कितना दक्षिणा देते हो, या सबसे पहले दंडवत आप किसे करते हो, किसके आज्ञा को पालन करते हो. दीज ऑल इंडिकेट कि आप उनको आदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो. आर गेटिंग दिस पॉइंट. So we have to understand who deserves more respect and who deserves to be more followed. So based upon the advancement of a devotee. So certain spiritual masters, among Shiksha Gurus, one who is having a higher spiritual strength automatically gets more surrender. And I told more points also. Then more respect for a disciple. ओके, कोई प्रश्न है किसी का? भी मैं प्रश्न लेकर थोड़ा. सुष्मिता माता जी, फिर पल्लवी माता जी. यस. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. जी प्रभु जी, अगर हमें जैसे शिक्षा गुरु कोई और है और हमारी जो हमें दीक्षा देने वाले गुरु जो है वो किसी और के मार्फत, जैसे हम जगह बदलती जाती है तो उनके थ्रू हुआ है, और हमें अभी एक तीसरी कंडीशन में ऐसे लग रहा है कि हमें शिक्षा या संग नहीं मिल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, और जैसे जो रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है. तो ऐसे केस में हम दूसरे अनादर शिक्षा गुरु रख सकते हैं क्या, कि या फिर हमें ये मतलब ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इनके थ्रू ही हमें दीक्षा प्राप्त हुई है, तो हमें उन्हें हमेशा उनको ही फॉलो करना है. Shiksha Guru can be more than one. So one can always choose different Shiksha Guru. One can take a blessing of one's own spiritual master. And one can also explain to a previous Shiksha Guru that because of certain situation, I have to now accept teachings from some other teacher, spiritual master. So ISKCON में ऐसा हो ही सकता है, जो specifically गृहस्थ, they may have to change the cities and they have to go from different places. And the needs may be different at different times. So accordingly, one can choose one's own instructing spiritual master.
That is okay, Maharaj, no problem. One can take blessings of spiritual master if possible, as much as possible, and then follow other instructing spiritual master. Okay. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Pallavi Mataji, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Dharan pranam. मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाह रही हूँ शिक्षा गुरु की। अभी तक तो हम लोग जैसे भक्ति में आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस आए हैं, और उसमें बहुत से चेंज भी हुए हैं। कभी टाइमिंग्स का दिक्कत था, कभी कुछ था। तो ये तो काउंसलर्स जो है, ये प्रभु जी शिक्षा गुरु, ये शिक्षा गुरु की कैटेगरी में होते हैं हम, ये समझना चाह रही हूँ मैं। ये हमने सुना था शिक्षा गुरु गुरु महाराज का ही लेवल होता है, महाराज ही होते हैं वो जो शिक्षा देते हैं वो होते हैं शिक्षा गुरु। इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज ओके? Actually, जीव गोस्वामी अपने एक संदर्भ में लिखते हैं कि पहले श्रवण गुरु होते हैं, जिनसे आप श्रवण करते हो। श्रवण गुरु में जिनकी शिक्षाओं का पालन करते हो, शिक्षा गुरु होते हैं। और उस शिक्षा गुरु में आप किसी से बहुत इंस्पायर होते हो, उनको आप दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हो। द मोस्ट प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु बिकम्स योर दीक्षा गुरु। सो श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ऐसा 3 गुरु के बारे में श्री जीव गोस्वामी बात लिखते हैं। और अगर हमने कभी ऐसे गुरु से सुना ना हो, ऑनलाइन से ही, मान लो हम तो काउंसलर सुन, जैसे जितने प्रीचर्स हैं उन्हीं को सुन सुन के सीखा है प्रभु सब, और ऐसे तो कोई कांटेक्ट में हुआ ही नहीं। सीधा अपने दीक्षा गुरु जो है उन्हीं से बस सुना था, उन्हीं से इंस्पायर हुए और उन्हीं से इनिशिएट होने का सोचा हुआ है। तो ऐसे तो कोई शिक्षा गुरु बीच में कभी आया ही नहीं, काउंसलर्स ही आए, प्रीचर्स ही आए। So they are also Shiksha Guru, right? Online, it doesn't affect as long as they're connected by Vani, online or offline. They're following the orders. Like Srila Prabhupada mostly instructed his disciples by letters, writing letters. तो फिर काउंसलर्स नहीं है प्रभु जी, वो तो सारे वही शिक्षा गुरु है। फिर जब हम उनको शिक्षा गुरु मानते थे तो हमें बताया गया कि ये शिक्षा गुरु नहीं होते हैं, शिक्षा गुरु तो ये हो महाराज। सकता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा गुरु वो भी हो सकते हैं, और जो भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं एक प्रकार से शिक्षा गुरु। सब एक वैष्णव शिक्षा गुरु, जिसमें पहले दिन कहा था, एक तरह से, क्योंकि सारे वैष्णव अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान का भक्ति कैसे करना है। परंतु यही है कि आपका वराइंग उनके पास रेसिप्रोकेशन रह सकता है ना। वो कैसे रह सकता है कि जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो आपको धीरे 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 आध्यात्मिक जीवन में, कोई सिर्फ क्लास देते हैं, कोई आपके पर्सनल लाइफ में आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जितना, और कोई जिम्मा लेते हैं, दीक्षा गुरु जिम्मा लेते हैं कि आपको आध्यात्मिक जगत को, भौतिक संसार से आपको आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर करेंगे। सो ही इज टेकिंग हाईएस्ट रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा है कि रिस्क, वन हु टेक्स मोर रिस्क, वी डिस्कस, वन हु क्रिएट्स मोर फैसिलिटीज, राइट? सो ऑटोमेटिकली यू विल रेसिप्रोकेट मोर विद सच डिवोटीज, है ना, उनके साथ। और फिर उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी अलग अलग रहेगा, है ना। कोई उत्तम अधिकारी रहेंगे, कोई कनिष्ठ अधिकारी रहेंगे, कोई मध्यम अधिकारी रहेंगे। तो उनके अधिकार के अनुसार भी आप उनके साथ अलग अलग व्यवहार करते हो। दोज आर लिबरेटेड और नॉन लिबरेटेड, एक्चुअली टॉपिक रह गया अभी। आई थिंक कल हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। That the disciples, sometimes the devotees may be liberated or may not be liberated, but of course it's mentioned here they may be liberated or may not be liberated, but the spiritual teachers are given respect as good as God, even they're not liberated. But non-liberated also, actually, even they're not liberated by following a liberated spiritual master once they're liberated. कल हम थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। कोई प्रश्न है और किसी का? आपको समझ में आ रहा है क्या आज का डिस्कशन? बहुत से डाउट्स हैं पर ये यस, वही ग्रुप में वही दीक्षा गुरु का ही पता था प्रभु जी अभी तक, तो बाकी कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ शिक्षा गुरु ना, और कभी समझ ही नहीं आया ये कॉन्सेप्ट शिक्षा गुरु का। क्योंकि जब जब समझा कि काउंसलर स्पीकर जो हमें समझा रहे हैं, जब हम उन्हीं को मान लेते थे, फिर हमको इतने मतलब पॉइंट्स मिले कि नहीं ये शिक्षा गुरु नहीं है, वो हमेशा ही ना कंफ्यूजन में ही रह गया ये टॉपिक। क्यों नहीं शिक्षा गुरु? शिक्षा गुरु बस एक नहीं रहते हैं, कई होते हैं शिक्षा गुरु। तो जो भी हमें कृष्ण के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, एनीबॉडी हु टीचेस द साइंस ऑफ कृष्णा इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर। आइडियली तो यही है। अभी उसमें कितना रिस्पेक्ट, कितना हु डिजर्व्स हायर और लोअर रिस्पेक्ट, दैट वी डिस्कस। दैट डेफिनेटली देयर आल्सो शिक्षा गुरु। जी प्रभु जी, मतलब समझ तो यही आता था, आप अब सुना है तो आप और समझेंगे, फिर समझ आ जाएगा।
ये तो उसमें स्टेटमेंट भी शो कर देते थे प्रभु जी, वो तो काउंसलर्स, कई काउंसलर्स, कि एवरीबॉडी नाउ अ डेज थिंक दैट ही इज अ शिक्षा गुरु। कोई स्टेटमेंट है प्रभुपाद की, आई विल, मेरे को कोई मैसेज में मिलेगा, देन आई विल डेफिनेटली Okay, फॉलो। forward me, forward me, please. Yes, Swami Kanti Kirti Mata ji. हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम लोग शिक्षा दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु का ज्यादा सुन रहे हैं तो फिर वो ठीक है क्या? So, वो ठीक है क्या? So definitely, if you're taking blessings and that is understood, that no, somebody is playing more role and taking responsibility, but Shiksha Guru's teaching should be aligned with the Diksha Guru, basically. That's the point. And we should see how our Diksha Guru is being represented through Shiksha Guru also. So our connection and our respect to Diksha Guru always remains same. So we should see our Shiksha Gurus also are representatives of our Diksha Guru. They are assistants of spiritual master who are assisting us to take closer to Krishna. If you are saying कि हमारे शिक्षा गुरु का शिक्षा बहुत अलग है हमारे दीक्षा गुरु से, फिर हमें नहीं सुनना चाहिए, या हमें दीक्षा गुरु से सुनना चाहिए, जो शिक्षा गुरु उनका पालन कर रहे हैं या उनके इंस्ट्रक्शन को ध्वनित कर रहे हैं उनको सुनना चाहिए। और स्पेसिफिकली सारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को जो फाउंडर आचार्य है उनके टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए, और फाउंडर आचार्य के टीचिंग्स को दोहराना चाहिए, उनके जीवन में पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी। सो इफ यू आर हियरिंग, नॉर्मली तो ऐसे होता नहीं है ना ISKCON में, मतलब मोस्ट ऑफ द शिक्षा गुरुज आर फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद, और तो मतलब that is okay, but because we should also heard sufficiently from our Diksha Guru, हमें सुनना चाहिए sufficiently। उससे क्या होगा कि फिर हम जो भी शिक्षा गुरु कह रहे हैं वो भी, क्योंकि सारे टीचिंग्स एक ही है, सब प्रभुपाद जी के पालन कर पा रहे हैं, तो हम शिक्षा गुरु के द्वारा भी हमारा दीक्षा गुरु के प्रति आदर बढ़ेगा, क्योंकि वही टीचिंग्स को दोहरा रहे हैं ना। तो we should see how our guru is coming represented by so many other शिक्षा gurus. तो we should see प्रभु जी, मेरे केस का मैं बताती हूँ। जैसे मैं पहले मस्कत में थी तो उधर टोटली हम लोग हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज का ही सुनते आ रहे थे। जैसे मैं इधर आ गई, शिफ्ट हो गई, तो मेरा हियरिंग उनके बारे में थोड़ा कम हो गया। इधर जैसे एसोसिएशन मिल रहा है उसके हिसाब से अभी मैं सुनते जा रही हूँ, या और मतलब प्रिंसिपल सर सेम, बट हियरिंग में थोड़ा वो कम हो गया है। तो अभी So that is okay, Mataji, but we should see how the same teachings are represented first of all, and those teachings, which are same, we should accept, and we should see that is a reflection of our own spiritual master. They are represented here through different Shiksha Gurus, and we should have always more respect to our spiritual master because he's delivering us as an etiquette also. yes. Okay. Even in case of me also, Prabhu, Bhakti Charu Maharaj ka मैं disciple हूँ. After that, now I am लोकनाथ स्वामी महाराज and Bhakti Prem Maharaj का हमको बताया गया है. So, right. Okay, I think tomorrow again I'll discuss this more, this topic, and then we'll clarify more. Okay.